Hello everyone, good afternoon. I hope you all can hear me and see me clearly. Please write yes in the chat. Devin sir, I hope I'm clearly audible. You're audible, but the video is off, I think. Okay, just give me a second. Yes, great. So now the video is also visible. Okay, great. Sir, you can take a minute to settle down, share screen, then we'll start the session. Good afternoon, everyone. Welcome to the Monday afternoon session. We have a community session at 6 p.m., so don't forget to join in. And for today's afternoon free session, we have Mr. Devin Mehta with us, who will be taking this up. We'll start with any possible option trade or strategy trade. If not, then we'll move towards the levels for tomorrow's expiry, BTST, stock options trade, and then we'll start taking up the stock queries. Stock queries will take it up on first come first serve basis. If you have any, start dropping them, and please don't spam. It's a small request. Please don't spam. Apologies for that. Uh, is my screen visible? Yes, sir. Your screen is visible. You are visible. Welcome to the afternoon session, sir. We are all set. You can start the session. Great. So we'll start with Nifty, Bank Nifty. Firstly, good afternoon to everyone. We'll start with Nifty, Bank Nifty. We have seen a fantastic rally into the markets since last 5, 7 couple of days, and definitely Nifty is moving higher and higher, forming high top, high bottom formation continuously since last 7 to 8 trading sessions. That is kind of a fantastic move we have seen in Nifty as well as Bank Nifty. Currently, Nifty is trading very close to the levels of 23,700 levels. So we'll discuss the support and resistance now for Nifty, Bank Nifty, and we'll try to take some queries as well, and we'll try to take some trade if possible into the options, and definitely we'll try to recommend some BTST as well. So there are stock specific actions, and some of the stocks are on my radar. So we'll definitely recommend some BTST as well. For Nifty, 23,700 is the current levels where Nifty is trading. So on the lower side now, the support has been shifted higher towards 23,500, 23,550 levels. I think that will act as a strong support for Nifty for the coming expiry, as we have monthly expiry coming in this week. So 23,500 is a strong support which has shifted higher, and on the higher side 23,800 will be the immediate resistance for Nifty. If Nifty crosses and sustains above that particular levels, we can see a move towards 24,000 levels as well in the coming days. So overall, we have seen a good strength into the markets. Nifty has recovered well, and we can see it moving towards 23,800 and then 24,000. If it sustains above 23,800, the immediate resistance from the current level. So these are the levels for Nifty. 23,500 will act as a strong support for Nifty. Now, Bank Nifty, as far as Bank Nifty is concerned, I think Bank Nifty has been continuously outperforming the markets, the banking stock, the financial stocks are performing well. We have seen a fantastic move in those particular counter. Yesterday, Bank Nifty managed to close around, yesterday, I mean to say, on Friday, Bank Nifty managed to close around 50,500 levels. And today we have seen a gap up opening, which directly indicates a breakout above that particular levels. And further, the index has rallied, and it is trading around 51,700 levels. So I think on the higher side, 51,850, 51,900, that will act as a resistance for Bank Nifty. If it crosses and sustains above that, then we can further see the rally towards 52,500 levels as well. So 51,900 immediate resistance for Bank Nifty. If it sustains above that, 52,500 will be the next target for Bank Nifty. Those who are holding from lower levels, those who have purchased banking stocks and
the index as well, then one should keep trailing stop losses. I think on the lower side, the immediate support will be 50,650. If Bank Nifty closes below that particular level, then only we will see some further profit booking. Till then, there will be a good up move into the Bank Nifty. So I think overall we have seen a good strength in Nifty as well as Bank Nifty, and but both the indices can move further higher towards the mentioned levels. So I hope the levels are clear for Nifty as well as Bank Nifty. Anuj, I hope the levels are clear for Nifty and Bank Nifty. Yes, sir. Great. One of the stock is on my radar for BTST. I like to share that particular counter for BTST. That is REC Limited. So one can buy REC Limited at current market price. I'll just share the charts of REC as well. Right. So REC currently it is trading around 443 levels. One can enter this particular counter at the current market price. On the lower side, 433 can be the stop loss for REC, and on the higher side, it can move towards 469, 470 levels as well. So I think RAC is one of the BTST. We have seen a fantastic move from couple of days. Again, the from last two trading session, we have seen a kind of a sideways move, and a closing above 430 levels gives a good up move to this particular counter. So I think REC Limited can be traded as BTST for the targets of 469, 470 levels. So BTST Limited buy at 443, stop loss target will be 470, and the stop loss is BTST, yes, 433. REC Limited, correct. Yeah, REC Limited. Yes. Sir, I guess we can move towards the queries that we have. Yes, sure. Before moving to that, I'll just like to uh, have a look at India VIX. We have seen that India VIX has moved well today. It is up by around 8.89% approximately. It is up by 9%. So we have seen options moving well today. And those who are tracking options, if anybody has purchased a call option, so buying options was favorable today because India VIX was moving higher, and that will favor the option buyers. सो डेफिनेटली अगर किसी ने सही डायरेक्शन में अगर ऑप्शंस परचेस किए हुए, तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव ऑप्शंस में और अच्छा प्रॉफिट्स ऑप्शन में बुक किया होगा. सो इंडिया विक्स की तरफ ध्यान रखना चाहिए. इट इज अप बाय अराउंड 9%, और अगर ये फर्दर अप मूव दिखाता है तो आई थिंक जो ऑप्शन बायर्स है उनके लिए अच्छा फायदा होगा अगर सही डायरेक्शन पे सही टाइमिंग के साथ ट्रेड करें. We have Sensex expiry tomorrow. It's monthly expiry, so there will be the volatility, and hence timing will play a crucial role. टाइमिंग के साथ एंटर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. सो अच्छे टाइमिंग पे अगर सही डायरेक्शन पे अगर ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट्स बन सकते हैं. सो आई थिंक we have covered Nifty, Bank Nifty. We have covered India VIX as well. We have given one BTST. I'm tracking one or two more stocks for BTST. So if I find any, I'll definitely recommend. Till then, we can take some queries, Anush. So your view on Dixon? I think overall the chart structure is good. We have seen a bounce back from lower levels, and it has crossed the initial resistance and trying to hold that particular levels. So I think those who are holding Dixon can hold with a stop loss of 14,100 levels. The stock can further move higher towards 15,500 levels as well. So I think definitely stocks can be hold, and this stock can give a further move towards 15,500 levels. So your view on trend?
Okay, so I think trend has shown a bounce back from lower levels, but faced a initial resistance around 5,300 levels. 5,300 के ऊपर निकलता है तो एक फिर से अप मूव देखने मिल सकता है. टिल देन थोड़ा सा हो सकता है वापस सपोर्ट लेवल्स की तरफ जाए. तो अगर किसी ने होल्ड किया हुआ है स्टॉक तो आई थिंक 4,800 विल बी द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो थोड़ा सा और वीकनेस स्टॉक में देखने मिल सकता है. On the higher side, once it crosses the level of 4,300 350 levels, एक अच्छा अप मूव ट्रेंड में देखने मिल सकता है. तो एक रेंज में रहेगा थोड़े टाइम. नीचे में 4,800, ऊपर में 5,300, ये लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए. कहीं पे भी अगर ऊपर या नीचे क्लोजिंग आती है तो फर्दर मूव इधर साइड देखने मिल सकता है. So I think till then the stock can trade in this particular range. So those who are holding 4,800 should be the strict stop loss on closing basis. Sir, we on Zomato, I'm holding 500 quantity at 235. Sure. Before going to Zomato, there is one more counter for BTHT. I like to share the charts of that particular counter. That is IDFC First Bank. We have seen that major banking sectors have given a good up move. Bank Nifty is moving well higher, and we have seen that we have seen a bounce back in IDFC First Bank as well. So I think in initial resistance has been crossed by this particular counter. 57 के ऊपर बहुत ही अच्छे से सस्टेन कर रहा है. तो आई थिंक ये काउंटर बाय करना चाहिए 58 के आसपास. अगर मिलता है 57.8 के आसपास, अगर थोड़ा डिप में भी मिलता है 10-15 पैसे अगर डिप में मिलता है तो वन कैन बाय दिस पर्टिकुलर काउंटर फॉर BTST. Stop loss can be 55.8 and targets can be around 61-62 levels. सो IDFC फर्स्ट बैंक एक काफी पिटा हुआ काउंटर है और थोड़ा सा इसमें बाउंस बैक और पुल बैक देखने मिल सकता है. तो आई थिंक द अदर BTST कैन बी IDFC फर्स्ट बैंक. 55.8 can be the stop loss and 61-62 can be the target. So you have on Tata Lexi. Before going to Tata Elxsi, I think Zomato was the query. Will Sorry. cover that particular query as well. Zomato normally on every session we have this particular query, and I think we recommend to hold because it is trading in a broader range of 240 on the higher side and on the lower side 205 200 is the support. I think 205 एक बार break हुआ था, लेकिन वापस एक बाउंस बैक और एक पुल बैक देखने मिला स्टॉक में लोअर लेवल से, और ऊपर में फिर से 235 240 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पे रुक रहा है. तो स्टॉक जब तक लेवल्स क्रॉस नहीं करता तब तक कोई बड़ा मूव नहीं है. रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है. ऑन द लोअर साइड 205 विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट एंड ऑन द हायर साइड 240 विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. 240 के ऊपर निकलेगा, क्लोजिंग दिखाएगा तो एक अच्छा अप मूव हम लोग बड़ा मूव स्टॉक में देख सकते हैं. सो दोज हु आर होल्डिंग 205 कैन बी द स्टॉप लॉस. So coming back, PEL versus Tata Lexi, which is better for swing trade? PEL versus Tata Elxsi, right? Yeah. आई थिंक डेफिनेटली PEL, क्योंकि PEL एक NBFC काउंटर है, और NBFC काउंटर अगर हम लोग देखें तो काफी सारे NBFC काउंटर में बहुत ही अच्छा मूव देखने मिला है. टाटा एलेक्सी का भी अगर हम लोग चार्ट चेक करें तो टाटा एलेक्सी में थोड़ा बीटन डाउन काउंटर है. इनिशियल रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है 5,700 के आसपास. उसके ऊपर क्लोज होगा तो छोटा सा मूव 5,900 के आसपास देखने मिल सकता है. सो आई थिंक कंपेयर टू बोथ, इफ यू कंपेयर बोथ द स्टॉक्स, आई थिंक PEL इज मच स्ट्रॉन्गर. the overall sector is also looking good. So I think PEL एक अच्छा मूव दिखा सकता है. We have seen many of the counters of NBFC stocks like Bajaj Finance, which has given a good up move. L&T Finance, we have covered this many times, and even this stock has given a good up move. Shriram Finance, even this stock has given a good up move. So I think PEL can be the counter which can be traded if we compare PEL with Tata Elxsi.
So this is one of the recommendation. I have one more BTST. Anuj, if you permit, I'll just share that as well. Sure, sir. Right. So we have seen a good move in the railway counters, and I think rights have given a good up move from the lower levels. So rights में BTST हम लोग कर सकते हैं 250 251 के आसपास चल रहा है. थोड़ा सा डिप मिलता है तो भी बाय कर सकते हैं अराउंड 247 248 के आसपास. 240 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 240, एंड दिस कैन मूव हायर टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 262 एज वेल. तो थोड़ा सा डिप मिले तो भी बाय करना चाहिए. 262 का टारगेट रहेगा. 240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे राइट्स में बीटीएसटी कर सकते हैं. So your view on Hudco? Definitely हुडको मैं अभी ट्रैक कर रहा था. दिस वाज ऑन माय रडार. So I'll just share the charts of Hudco as well. One can take a BTST on this particular counter as well. ये भी एक अच्छा काउंटर दिख रहा है. काफी अच्छे से हम लोग ने देखा है बाउंस बैक, और लास्ट 2-3 दिन में एक रेजिस्टेंस के ऊपर आके सस्टेन किया, साइडवेज हुआ, और उसके बाद फर्दर अपमूव आज हम लोग ने देखने मिला है. 211 के आसपास स्टॉक चल रहा है. So I think this can be purchased for BTST as well. 204 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के 227 के टारगेट्स आ सकते हैं काउंटर में. तो आई थिंक नीचे में ऊपर में एक थोड़ा सा छोटा सा रेजिस्टेंस 216 के आसपास दिख रहा है. I think if this particular counter reaches 216, one should keep trailing their stop losses. कॉस्ट पे आके स्टॉप लॉस रख देना चाहिए, तो एक अच्छा अपमूव फर्दर 227 230 तक देखने मिल सकता है. So I think definitely Hudco can be the other counter for BTST. So I've shared around 3 to 4 counters for BTST. It's IDFC First Bank, REC Limited, Hudco, and REITs. So we have shared 4 BTST today, and I hope we get a good profits by tomorrow. So coming back to the queries, I guess we were doing Hudco. Okay, we have already done. Yes, definitely. Yeah, So we have already Hudco done we have Hudco. covered, right? Yeah, your view on BHEL, BHEL. Well, again, this is one of the finest counter. It has given a good move from the lower levels. I think those who are holding 210 can be the strict stop loss. अगर 210 के नीचे जाता है, जो एक पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए. फर्दर ऊपर में आई थिंक द स्टॉक कैन मूव हायर टुवर्ड्स 230 लेवल्स. तो डेफिनेटली दोस हु आर होल्डिंग कैन होल्ड विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. 210 can be the stop loss, and on the higher side 230 अगर आता है तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं. 230 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट कैन बी 255 लेवल्स. So overall chart structure is good, trying to reverse from the lower levels, but one should keep trailing stop losses so that losses can be minimum, or there can be a good profit exit. Sir, BSE buy price 5860, 52 shares. BSE? Yes, sir. They have bought at 5860. Okay, 5860. I think it has purchased at the higher levels. But if anyone is holding for long term, then definitely one can hold. In fact, lower levels पे थोड़ा average भी कर सकते हैं. Supports की बात करूँ तो 4275 के आसपास एक strong support है. उसके नीचे स्टॉक डेफिनेटली गया था, लेकिन फिर से एक बाउंस बैक दिखा के वहां पे ये लेवल्स फिर से होल्ड कर रहा है. दैट इज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर दिस पर्टिकुलर काउंटर. तो आई थिंक 4250 4275 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर लॉन्ग टर्म के लिए परचेस किया हुआ है तो आई थिंक लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं स्टॉक में. इफ इट इज फॉर शॉर्ट टर्म, then definitely one should hold with a strict stop loss. Sir, your view on BDL?
I think definitely all the defense related counters have shown a good strength. Even BDL has shown a fantastic strength. We have seen a breakout of a falling supply trend line in this particular counter. On the higher side, 1350 is the resistance. It has crossed that particular resistance and it is trading above that. So definitely hold करना चाहिए counter. काफी अच्छा move इसमें देखने मिला है. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1270 1280 के आसपास. अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए. स्टॉक कैन फर्दर मूव हायर टुवर्ड्स 1500 लेवल्स एज वेल. तो यहाँ से और भी अच्छा मूव देखने मिल सकता है. ये जो रेजिस्टेंस है 1350 के आसपास का, ये क्रॉस करके स्टॉक सस्टेन कर रहा है ऑन द हायर लेवल. सो डेफिनेटली वन शुड होल्ड with a trailing stop loss mentioned of 1270 1280 levels. Sir, Coal India. Coal India, I think it is facing a resistance of around 415. I think 413-15 के आसपास जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. उसके ऊपर जाने के बाद 425 के लेवल्स आ सकते हैं. टिल देन स्टॉक में हो सकता है थोड़ा साइडवेज मूव देखने मिले. ऑन द लोअर साइड 396 395 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा. उसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो स्टॉक में फिर से थोड़ा सा बेरिशनेस, थोड़ा सा वीकनेस देखने मिल सकता है. तो आई थिंक 396 ऑन द लोअर साइड, 413 on the higher side, that can be the range for this particular counter. Once it crosses 413, उसके बाद एक फ्रेश बाइंग बननी चाहिए 425 लेवल्स के लिए. सो आई थिंक दैट विल बी द व्यू फॉर कोल इंडिया. So we on Titan. Titan, I think this is the stock which have not shown that good recovery. So I think Titan अगर कोई short to medium term के लिए hold कर रहा है तो I think exit कर लेना चाहिए. स्टॉक में एक अच्छा बाउंस बैक ही दिखा लेकिन कोई रिवर्सल के साइन नहीं है. इमीडिएट रेजिस्टेंस 3225 के आसपास 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहीं से नीचे आया तो इमीडिएट रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस ही क्रॉस नहीं हो पा रहा है स्टॉक से. तो आई थिंक अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए तो एग्जिट कर ले, लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कर सकते हैं. फ्रेश बाइंग तो कोई भी अभी रिकमेंडेड नहीं है जब तक कोई रेजिस्टेंस क्रॉस करके होल्ड नहीं करता स्टॉक. सो आई थिंक स्ट्रेंथ कम है. those are holding for short to medium term, exit कर लेना बेटर रहेगा. Sir, Adani Power. Okay, Adani Power, we have seen a kind of a bounce back from lower levels. Multiple support zone है ये यहाँ पे, which is around 465, नीचे में 450 तक. तो आई थिंक 450 465 एक काफी बड़ी रेंज है सपोर्ट की. वहां से एक बाउंस बैक देखने मिला है. ऑन द हायर साइड देयर इज अ रेजिस्टेंस अराउंड 550. अदानी स्टॉक्स में नॉर्मली न्यूज फ्लोस काफी रहते हैं एंड देयर इज अ गुड वोलेटिलिटी इन दिस पर्टिकुलर काउंटर्स. जब भी न्यूज भी आता है तो आई थिंक अगर कोई होल्ड कर रहा है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे. नाउ द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैन बी 510 लेवल्स, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है. तो वो लेवल्स ध्यान देना चाहिए. 510 के नीचे अगर जाता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए. On the higher side, immediate resistance is around 550. If it crosses that level, I think it can further move towards 590 levels as well. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक है. कोई बड़ा रिवर्सल अभी तक नहीं देखने मिला है. अगर कोई होल्ड कर रहा है 510 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं. So view on Bales 300 call bought at 6.5. 300 Call bought at 6.5. I think 5.2 is the current market price. बेल ने एक आज अच्छा मूव दिखाया था. आई थिंक ये ऑप्शन ऊपर में 7.6 तक मूव दिखाया था ऑप्शन ने, लेकिन वहीं से नीचे आया.
आई थिंक ये इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 4.5 का. If this breaches the level of 4.5, one should exit. Monthly, we are into the last week of the month and monthly expiry काफी पास है. स्टॉक 300 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है. आपने ऑप्शन ठीक लिया है, सिर्फ यही है कि ऊपर में आए तो एग्जिट करने की कोशिश करें एंड नीचे में 4.5 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख ले. Bhupender ji, for natural gas, you can join our expiry at 6 p.m. today. So Tata Motors. I think Tata Motors is one of the beaten down counters और एक bounce back ये स्टॉक दिखा रहा है. On the higher side 725 एक रेजिस्टेंस है. ये स्टॉक में काफी हायर लेवल्स पे लोग फंसे हुए हैं. तो आई थिंक ये स्टॉक में रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद थोड़ा सा फिर से एक नीचे का मूव देखने मिल सकता है. दोज हु वांट टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म कैन ट्राई टू एंटर. डिप्स में भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं. ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी तक इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है. इफ यू कंसिडर द वीकली चार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंटर तो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ या कोई बड़ा रिवर्सल काउंटर में नहीं दिख रहा है. सो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं. शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर नीचे में किसी ने बाय किया है तो आप 698 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के भी होल्ड कर सकते हैं. सो 698 कैन बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. And so this will be the last query for the day. Suzlon. सो सुजलॉन अगेन काउंटर हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं. आई थिंक ऑन द हायर साइड 59.5 60 इज अ रेजिस्टेंस. ऑन द लोअर साइड सपोर्ट है, काफी दूर है 50 के आसपास. लेकिन अगर कोई होल्ड कर रहा है आई थिंक 56 कैन बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. 56 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें. जैसे ही स्टॉक 59 के लेवल्स निकालेगा आई थिंक दिस कैन मूव टुवर्ड्स 61 एंड देन 65 लेवल्स एज वेल. तो छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं. अगर इसके नीचे जाता है विच इज 56 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो आई थिंक वन शुड ट्राई टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर काउंटर. So guys, that will be all. Thanks a lot everyone. We have already taken a lot of queries. Bill, HAL, BDL, BHAL, all of the queries have been taken. So that will be all. Thank you everyone. See you again soon. We have another session at 6 p.m. Thank you, Devin sir. We have already Thank pinned you, the thank you. messages. You can check out the messages there. Yes.